सपोज बेटा condition is that h is tending to 0. H is tending to 0. So what is the meaning of कि h is tending to 0? What is the sense of things कि h is tending to 0? But h is tending to 0 means that कि h is not equal to 0, but h is very closer to 0. Okay बेटा. So let us take beta one thing. Let us suppose we just draw a curve on the screen, and this curve is called y is equal to fx. So let us suppose a curve y is equal to fx. Okay बच्चों, let us suppose a curve y is equal to fx. We just take one point here, and this point is a. यह पॉइंट बेटा क्या है? a. And beta h is tending to 0 means what? H is tending to 0 means what? कि h is infinitely. H is tending to 0 means कि h is infinitely. H is infinitely positive number. H is infinitely positive number. So h is tending to 0 means that कि h is infinitely a positive number, and you can say कि sir h is 0.000000001. Okay, this is very closer to 0. Okay, so let's suppose we just take a point A on the graph, and beta just take another point. बेटा मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं यहां पे, and this point is called ये जो पॉइंट है बेटा, इसको बेटा मैं बोल रहा हूं a प्लस एच. क्या बोल रहा हूं बेटा? a प्लस एच. ओके, a प्लस एच. और इसके लेफ्ट में यहां पे बेटा मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, और इसको मैं बोल रहा हूं, हम इसको बेटा बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से बेटा, दिस इज a माइनस एच. दिस इज a माइनस एच. अब लेट सपोज बेटा ऐसा मान लो कि इसकी जो वैल्यू है ना बेटा, इसकी वैल्यू 2 है. इसकी वैल्यू बेटा 2 है. तो ये क्या होगा बेटा? दिस इज 2 पॉइंट, ऐसा कुछ होगा. अरे होगा ना. और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? दिस इज ये कुछ ऐसा होगा बेटा. तो गाइस जस्ट ऑब्जर्व कि व्हाट इज f of a plus h. f of a plus h is equal to 2.00000000001. Okay, and what is f of a minus h? f of a minus h is 1.9999. ऐसा कुछ है. अब देखो बेटा हुआ क्या कि जब भी लिमिट बेटा बन रहा था, बेटा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अस. बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि इस वैल्यू को लिखना, इस वैल्यू को बेटा कॉपी पेन पे लिखना,
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अस, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था हम लोग के लिए इस वैल्यू को कॉपी पेन पे बेटा लिखना। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो एक्चुअली बेटा ये है क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम राइट हैंड साइड। बेटा ये राइट साइड से y की वैल्यू, राइट साइड से y की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम राइट हैंड साइड और दिस इज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना? ये जो बेटा वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू है राइट हैंड साइड से, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बट जैसे बेटा लिमिट आया, लिमिट ने क्या बोला कि तुम इतना, जो लिमिट ने बोला कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस वैल्यू ऑफ y फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये जो राइट साइड से y की वैल्यू है इसकी टेंडेंसी क्या है, व्हाट इज द टेंडेंसी, इसकी किस तरफ जाने की टेंडेंसी है। तो whenever limit is come, then approximate value is converted into exact value, and this is called 2. And here limit h is tending to 0, f of a minus h is equal to 2, and this is called right hand limit. This is called right hand limit, RHL, राइट हैंड लिमिट, मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा, RHL, and this is called left hand limit, and you can say LHL. Okay बेटा, and LHL is equal to RHL, then limit exist. जब बेटा LHL RHL के बराबर होगा तब जाके बेटा लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। Trading strategy needs these features. Number one, trader, your very own approximation. Okay बेटा, whenever LHL is equal to RHL, then limit will be exist. Okay, तो बेटा, है ना, यहां तक बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, लेट मी नो। हैव एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? No doubt, sir. ओके, important observation. Important observation.
अब मान लो बेटा कि दिस इज अ नंबर लाइन एंड दिस इज ए। तो बेटा लेट मी नो हाउ मेनी वेज टू अप्रोच ए को अप्रोच करने का कितना तरीका है? दो तरीका है। या तो बेटा हम ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, है ना? वी कैन अप्रोच ए फ्रॉम लेफ्ट साइड्स एनी राउट बेटा, या वी कैन अप्रोच ए फ्रॉम राइट साइड, या वी कैन अप्रोच ए फ्रॉम राइट साइड। हम ए को दो तरीका से बेटा अप्रोच कर सकते हैं। या तो हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, या इसको हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं। तो वी हैव टू वेज टू अप्रोच ए फ्रॉम बोथ साइड, that is left side and right side. तो बेटा here if we if we approach if we approach A from right hand side on on number line on number line, then limit is called limit is called right hand limit. अब यदि तुम लिमिट को राइट साइड से अप्रोच करते हो तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। लेट अस सपोज दिस इज योर नंबर लाइन, this is your number line, let us suppose this is your number line a and हम ए को बेटा अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से। किधर से अप्रोच कर रहे हैं बेटा? राइट साइड से। तो वी कैन से दिस इज कॉल्ड आर एच एल, वी कैन से दिस इज कॉल्ड आर एच एल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? आर एच एल। और क्या होता है बेटा? आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। और देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे ना, यहाँ से जब आगे जाते हैं बेटा तो हम लोग एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे तुम देखो ए प्लस एच क्या था? ए आर एच एल था ना बेटा। ए प्लस एच इज व्हाट? आर एच एल। तो हम लोग एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? ए प्लस एच से। तो यहाँ पे एच क्या होगा बेटा? एच इज फाइनली व्हाट? एक्स माइनस ए। तो दिस इज सिंपली लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अरे क्लियर है? एंड यू कैन से कि दिस इज सर एफ ऑफ ए प्लस। इसको तुम एफ ऑफ ए प्लस बोल सकते हो, है ना? एफ ऑफ ए प्लस, इसको एफ ऑफ ए प्लस तुम बोल सकते हो। एफ ऑफ ए प्लस बोल सकते हो। गॉट इट? सिमिलरली similarly if we approach x is equals to a from left hand side, from
left hand side, then the limit is called left hand limit. Then the limit is called left hand limit, or you can say LHL, and here you can say RHL. Okay, bete. So let us suppose this is your number line and this is your point A, or if you approach A from लेफ्ट हैंड साइड, यदि तुम ए को बेटा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तो यू कैन से कि दिस इज कॉल्ड LHL, दिस इज कॉल्ड LHL, दिस इज कॉल्ड LHL. Okay, so finally what is the formula of LHL? So LHL is equal to limit x is tending to a minus fx. Okay, and similar of that बच्चों यू कैन रिप्लेस x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे तुम x को कैसे रिप्लेस करोगे बेटा, है ना, या तुम इसको, या देखो तुम इसको x को a माइनस h से, है ना, यू कैन रिप्लेस x इज a माइनस h. तो फाइनली बेटा क्या होगा, दिस इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f of a minus h. Okay, and normally you can say f of a minus means what? You can say normally about LHL. Okay, any doubt? Beta, everything is clear now? Yes, sir. Limit x tending to a fx. तो बेटा देखो इसका मतलब है कि इसका LHL लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx and limit x tending to a plus fx. तो for limit to exist, both LHL and RHL must exist and should be equal. Let's say L should be equal, you can say L. Okay, if LHL is equal to RHL, if LHL is equal to RHL is equal to L, then limit extending to a fx is equal to L, and this L is called limiting value. This L is called limiting value. This L is called limiting value. ये जो L है ना बेटा, इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग वैल्यू. This L is called limiting value.
ओके, एनी डाउट बेटे अप टू हियर? बेटा कोई डाउट है आपका? No, sir. समिता? नहीं सर. बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, hence hence for limit to exist at x is equals to a, both LHL and RHL must exist and shall be equal and shall be equal. And shall be equal. Okay बेटा, अब let us some example. Let us some example. अब let's say fx is equal to xx square plus 5. Then to find limit x tending to 3 fx. अब आपको x tending to 3 पे fx की वैल्यू फाइंड करना है. अब देखो बेटा, तो सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल तो आपका सिंपल कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx. मतलब बेटा सवाल का क्लियर कहना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 xx स्क्वायर प्लस 5. तो देखो बेटा, अब यहां तो कोई फॉर्म जनरेट हो नहीं रहा है. अब सीधा लिमिट x3 को टेंड कर रहा है. तो ये अब जब x3 को टेंड कर रहा है तो ये पूरा फंक्शन किसको टेंड करेगा? दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 5, दैट इज 9 प्लस 5, एंड योर आंसर विल बी 14. ये आपका आंसर. बट बेटा दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. ये आपका डायरेक्ट मेथड. अनदर वन इज बेटा एग्जिस्टेंस. मतलब आपको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा कि आपने ऐसे डायरेक्टली कर लिया इसको. मतलब यू कैन डू इट डायरेक्टली. ये आपने डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर दिया. बाय द वे बेटा, सेम क्वेश्चन को, दैट सिमिलर क्वेश्चन वी कैन टैकल by also LHL and RHL. How? Just consider here. Let's say fx is equal to xx square plus 5, 10. आपको बताना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 xx स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा. अब देख बेटा, लेट्स से दिस इज अ नंबर लाइन. दिस इज अ नंबर लाइन. और बेटा यदि मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, दिस इज कॉल्ड LHL. यदि मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करूँ, दिस इज कॉल्ड RHL. अरे कोई दिक्कत है? तो बेटा यहाँ पे तो 3 है ना बेटा, सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3. तो वी कैन अप्रोच ऑल्सो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, नो इशू. अब ले लो, मैंने LHL निकाल रहा हूं. मैं LHL निकाल रहा हूं. मतलब LHL मतलब एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस. तो मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 2.9. तो जब x इज इक्वल्स टू 2.9 लिया, तो बेटा व्हाट इज द fx का मिलेगा? fx मिलेगा 2.9 का स्क्वायर प्लस 5.
मतलब क्या मिलेगा बेटा, 2.9 का स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा बताओ बेटा, 2.9 का स्क्वायर करो और उसमें 5 को ऐड करो। आई थिंक दिस इज 13.4। कोई दिक्कत है? अरे क्लियर है? फिर आपने लिया x बराबर 2.99। व्हाट इज द एफ एक्स? सिंपली 2.99 का स्क्वायर प्लस 5। अब 2.99 का तुम स्क्वायर करो, 2.99 का स्क्वायर करो, उसमें फिर प्लस 5 को ऐड करो। दिस इज 13.9401। फिर तुमने लिया x बराबर 2.999। अब बताओ एफ एक्स क्या मिलेगा? तो तुमको 2.999 का स्क्वायर करना है और फिर उसमें 5 को ऐड करना है। तो बेटा 2.999 का स्क्वायर करना है और फिर क्या करना है बेटा, उसमें 5 को ऐड करना है। आई थिंक बेटा दिस इज 13.994000001। और एक आखिरी ले लो, x इज इक्वल्स टू 2.9999। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स? तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, 2.9999 इंटू 2.9999 प्लस 5। दिस इज बेटा 13.9994। guys let me, what is the tendency of this fx? fx की टेंडेंसी किस तरफ है बेटा बताओ, fx की टेंडेंसी किस तरफ है? अरे बेटा लेट मी नो, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ fx? fx किस तरफ जा रहा है? लेट मी नो बेटा, fx किस तरफ जा रहा है बेटा? अरे बोलो। दिस इज 13.41, दिस इज 13.9401, दिस इज 13.994001, दिस इज 13.9994। towards 14 से। या इट्स ए 14 के क्लोज जा रहा है बेटा। ओके, ये बेटा 14 के क्लोज जा रहा है। ओके ना? अच्छा, अब इसका आरएचएल चेक करो बेटा, आरएचएल बताओ, आरएचएल क्या होगा? तो देखो, अब इसका आरएचएल देखो, आरएचएल इधर निकालो। आरएचएल, आरएचएल क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, है ना? तो अब तुमने आरएचएल में बाय द वे, चलो मैंने ले लिया, लिया x इज इक्वल्स टू 3.1। एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स है 3.1 का होल स्क्वायर प्लस का 5। तो 3.1 का होल स्क्वायर और इसमें तुम प्लस का 5 ऐड करोगे बेटा, तो दिस इज आई थिंक 14.61। अब तुमने बाय द वे क्या करो कि हम मतलब वैल्यू रख के चेक कर रहे हैं बेटा, गॉट इट ना? अब मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 3.01। एफ एक्स क्या मिलेगा बेटा, दिस इज 3.01 का होल स्क्वायर प्लस का 5। तो यू कैन जस्ट पुट 3.01 का होल स्क्वायर प्लस का 5। दिस इज 14.0601। फिर तुमने लिया x बराबर 3.001। अब बताओ एफ एक्स क्या मिलेगा, 3.001 का आप स्क्वायर करोगे और तो उसमें क्या मिलेगा बेटा, दिस इज 14.006001। और x बराबर ले लो 3.0001। तो लेट मी नो एफ एक्स। तो 3.0001, आई थिंक बेटा दिस इज 14.0006। तो गाइस लेट मी नो कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ आरएचएल? आरएचएल की टेंडेंसी किधर है बेटा, 14 की तरफ।
14 की तरफ, मतलब बेटा हेयर LHL is 14, RHL is 14, so limit x tending to 3 fx is also equals to 40। बेटा ऐसे भी आप आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हो। बेटा नथिंग एल्स, बहुत इजी सा मेथड है बेटा, है ना, कोई ज्यादा कुछ भी नहीं लगाना है बेटा, वेरी सिंपल मेथड। एनी डाउट बेटा, लेट मी नो। बेटा एनी डाउट? No, sir. अब क्लियर है बेटा? हाँ सर, सब कुछ क्लियर है। ओके बेटा, तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन बेटा, कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू सर, बाय। हम्म।